Class 6, Chapter 3, Physics, Force. Hello students, this is your Archita ma'am. Today in this presentation, I am going to discuss Chapter Force. Here I am going to discuss force as a push or pull, then effects of the forces, then force of friction and some of the examples related to force. So let's start the chapter. First, what is force? Force क्या है? In everyday life, we use the word force. To open a door, we either push or pull it. We throw, kick, or hit a ball. Similarly, when we draw a bucket of water from a well, we pull the rope. So this push or pull, सारे एक्टिविटीज़ में हम आइदर पुश या फिर पुल का यूज़ करते हैं. तो ये पुश और पुल को फोर्स कहा जाता है. Force as push or pull can bring about changes, many changes. पुश या पुल करने से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं किसी भी बॉडी में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में. तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है? फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन, शेप एंड साइज, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस कैन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स. नाउ वी वुड डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम डिस्कस करते हैं. तो फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बताया. सो हेयर इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव और स्टॉप. Have you ever thought why the ball is moving or why the ball has suddenly stopped? So you must think about this. Actually, because of the some force, you can make an object move or you can stop an object. When a force is applied to an object at rest, it begins to move. For example, by pushing a car or pulling a trolley, the car or the trolley begins to move. Second one, we would say force can change the speed of the object. What happens if a force is applied to an object which is already moving? अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? If the force is applied in the direction in which the object is moving, it begins to move faster. और अगर हम उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा. Next, we would see force can change the direction of a moving object. Direction, किसी भी एक moving object का direction हम change कर सकते हैं. From this slide, if you see, the direction of the ball is changed by holding it, by kicking it with stick. We can change the direction of the ball. So, when a player by kicking or moving a football can change its direction. Similarly, a batsman can change the direction of a moving ball by hitting it with a bat. Now, fourth one, we see change the shape or size of an object. फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज चेंज हो सकता है. See the example of can. When we are applying force with our fingers, the shape of the can has got changed. So force, by applying force, you can change the shape of the can. Now we would discuss these contact forces. As from the name itself, you can define this term. Contact force means the force which comes into play when it is in contact with the object.
ऑब्जेक्ट के साथ जब कांटेक्ट में रह के किसी फोर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है हम उससे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक करके हम एग्जांपल्स भी देखते हैं। See in figure 1, the boy is pulling a trolley. He is actually applying his muscular force in pulling the trolley. So this could be classified under muscular force. So what we can explain it? The force which is applied by the muscles of living beings are known as muscular force. Now muscular force we are using in many places, like when we are walking, talking, eating, everything. See here, the friction force is given. Friction force is also a contact force. It is the force exerted by the surface in contact with other in order to oppose the motion of a moving body is known as the frictional force. इसको हम डिटेल्स में और भी थोड़ा पढ़ेंगे. One more contact force is a mechanical force. The force applied by a machine is known as mechanical force. A mechanical force involves contact with another object. An example of mechanical force is pushing of a door by someone. The person's hand moves direct contact with the door and applies forces to it. So mechanical force हम machines के contact में जब रहते हैं हम mechanical force का word use करते हैं. Now I would explain in details the friction force. Friction is very much important. I would like to discuss this one. So force is required to stop a moving body. When an object moves in contact with another object, a force called frictional force or friction slows down the motion of the object. जब एक बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड में तो उसका मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है. सो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन. नेक्स्ट वी वुड सी फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन किस किस चीज़ की वजह से अफेक्टेड हो सकता है. So here 3 points are given. The adhesion between body surfaces, it simply means the contact between two body surfaces. Second one is roughness of the surface, that means unevenness of the surface. Third one is deformation of the body, that means shapes of the body. तो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रिक्शन. और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं बट ये 3 फैक्टर्स मेन फैक्टर्स हैं. नाउ वी वुड डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने सारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं. फ्रिक्शंस इज ऑफ 3 टाइप्स. हम जनरली 3 टाइप्स इसको के फ्रिक्शंस को पढ़ेंगे. दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. First, we would see static friction. If we push a wooden block placed on a table with a small amount of force such that it does not move, the force of friction that develops between two surfaces is known as static friction. जब एक बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो उस बॉडी और ग्राउंड सरफेस में या फिर वो जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उनके बीच में जो फ्रिक्शन प्ले करता है रोल, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट वी वुड सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन. इफ वी इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक placed on the table, it will start sliding slowly. That means it will start moving slowly. The frictional force is termed as sliding or dynamic or kinetic force.
Next one we would see, it's rolling friction. When a body rolls over the surface of another body, the friction that develops between the surfaces is called rolling friction. Rolling friction is much less static or sliding friction. Thus, all moving bodies like cars, scooter, buses, etc. have wheels because this reduces friction to a large extent. Next, we would see effects of friction. As from the diagram, you can see that friction can leads to burning, fire, vehicle motion, walking, and etc. etc. So, friction actually produces heat that helps in heating parts of any object or to warm ourselves. In winter, what we do generally rub our hands. Why we rub hand? To produce heat in us. So, friction actually opposes motion and ultimately stops a moving body. Friction produces heat. Friction causes wear and tear. For example, the soles of shoes wear out due to friction. In dry weather, when wind blows in forest, dry leaves rub against each other and may catch fire due to friction. फ्रिक्शन की वजह से जंगलों में आग भी लग जाती है क्योंकि एक दूसरे से पेड़ टकराते हैं तब फायर निकलता है जिसकी वजह से आग लग जाती है. Next, we see decreasing friction. Decreasing friction, why it is necessary? Actually, unwanted friction leads to wear and tear, leads to loss of property, loss of energy also. So we need to reduce this unwanted friction. It's very much necessary. In order to reduce this unwanted friction, we can use any of the following methods which is given. First one is lubrication. Lubricants can fill the minute unevenness of the two surfaces and separate them by forming a very thin layer in between. That is converting solid friction into fluid friction, which is definitely less than solid friction. Next, we can do by using ball bearings. Ball bearings, as we know, rolling friction is much less than the static friction. Hence, we are converting this static friction into rolling friction by using this ball bearings. Magnetic levitation also, you can reduce the friction. Or the most common method which we are applying it at home also, by polishing any surface. By polishing this surface, irregularities which is actually causing friction can be reduced. Next, we are coming to this non-contact forces. From the name itself, you can see this non-contact force means when a force is applied on an object by another object without coming in contact with each other. दोनों object या फिर हम जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उन दोनों चीज़ों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर देखा जा सकता है, तो हम उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बहुत सारे एग्जांपल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि देखेंगे स्लाइड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? When we rub a plastic comb on our dry hair and bring it near small bits of paper, they are pulled towards the comb. This is because when a comb is dropped on dry hair, an electric charge is produced in it, and this is called electrostatic force.
Next we see it's gravitational force. Gravitational force is, we know, everything is attracted towards down, everything fall towards ground. Why? This is because of gravitational force. Next one is magnetic force. Magnetic force, when you bring a magnet near the magnetic materials like iron, nickel, these are the magnetic materials, they will be attracted towards the magnet. सो बिना बॉडी के टच में आए हुए या कांटेक्ट में आए ये अपना रोल प्ले करता है। तो इन सबको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं।